Ramarao Mandela. That is also a sweet and short book. It is a very short but it is very sweet book. So you can read from that book also. So that will cover your medicinal chemistry, and that is enough, I think. Sympathetic drug acting on sympathetic nervous system. That is a sympathomimetics and sympatholytics, or these are also known as adrenergic drugs or adrenergic adrenalolytics. Okay, so whatever medicinal chemistry points are important for GPAT Niper, that will be we are going to see that only. So first, sympathetic and parasympathetic nervous system, they are nothing but they are the part of autonomic nervous system, and it is one of the most precious gift given by the God to us, because these two systems, they work in a coordination, and they used to prepare us for either fight, flight, or to conserve the energy. Okay, so out of this sympathetic nervous system controls the system like your cardiovascular system, then bronchial smooth muscle tone, then muscular contraction, then metabolic, they have some metabolic role also. So sympathetic nervous system prepare individual for either fight or flight. That is for in case of emergency situation. Okay, so your sympathetic nervous system will be activated in emergency situation. As I have told you when we was discussing the same chapter from pharmacology. Suppose that आपके सामने अगर शेर आता है, तो आपके क्या एक्शंस होंगे? अगर जंगल में आप अकेले हो, आपके सामने अचानक से शेर आता है, तो आपके एक्शंस क्या होंगे? मतलब एक तो सबसे पहले आप डर जाओगे, उसके बाद आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. So you will get fear, your CNS will be stimulated. Okay, so then your heart rate will go up, your force of contraction heart rate, then peripheral blood vessel will be constricted, then skeletal blood vessel will be dilated, so that there will be increase in the blood pressure, then there will be mydriasis, right? Then you will get fear, and there will be a goosebump on your goosebump on your whole body. पिलोमोटर इरेक्शन, पिलोमोटर मसल इरेक्ट होगा, और आपके बाल खड़े हो जाएंगे बदन पे, आप डर जाओगे, और आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको भागना है या फिर फाइट भी करना है उसके साथ, तो ये सब लगेगा. दैट यूज टू प्रिपेयर यू फॉर फाइट और फ्लाइट. ओके, एंड यू नो दैट sympathetic nervous system has a neurotransmitter, that is a noradrenaline or adrenaline. So most of the cases you have noradrenaline at the postsynaptic nerve. Okay, at a few organs you have adrenaline. Okay, one or two organs are there only, so you have over there adrenaline. There is just little bit difference between the structure of adrenaline and noradrenaline. So we will discuss it in upcoming slide, don't worry. So this system will prepare you for either fight or flight. Sympathomimetics, what are these are the drug which will copy or which will mimic the responses produced by stimulation of sympathetic nervous system. Okay, so if any drug is able to produce the similar actions which is normally produced by stimulation of sympathetic nervous system, that drug is known as a sympathomimetics. All drugs, okay, those kind of drug are known as a sympathomimetics. And these kind of drug will have structural similarity. Why they will produce a similar effect like noradrenaline or adrenaline? Because they have structural resemblance, structural similarity. Okay, so their structure will be little bit similar to your noradrenaline structure or adrenaline structure, and that's why these drugs are able to combine with the same receptors which normally noradrenaline and adrenaline used to combine. Okay, so वो दो जो ड्रग है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, तो उनमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर उनका थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है. किसके सिमिलर? आपके नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन के जैसा. तो वो स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से वो ड्रग जाके वही रिसेप्टर के ऊपर कंबाइन होता है. दैट्स व्हाई दे आर sympathomimetics. Okay, therefore they are used to mimic or alter the physiological functions associated with the sympathetic nervous system. Now, what are the sympatholytics? So sympatholytics, these are the drug which will block or which will inhibit or which will oppose the actions produced by sympathetic nervous system or sympathomimetic drugs. So those drugs which will inhibit the actions produced by sympathetic nervous system are known as a sympatholytic. These are the very basic terms, and we have already completed this. Okay, but still for your revision, these drugs clinically are used in. Now, what are the clinical applications of these sympathomimetics and sympatholytics? Okay, so you might have got idea about this. Okay, so they are clinically used in the hypertension,
they are used in the hypertension to prevent the uh, decrease the increased of blood pressure. Hypertension means what? Blood pressure more than normal. Normal कितना होता है 80 by 120, 120 by 80, ठीक है. 120 mm of Hg, 120 mm of Hg systolic blood pressure and 80 mm of Hg diastolic blood pressure. That is a normal blood pressure. क्या होता है कि कौन सा भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जो होता है अपना, से ब्लड प्रेशर कौन सा भी ले लो, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, या फिर आपका यूरिन वॉल्यूम ले लो, आप कौन सा भी ले लो, जैसे आपका वो हार्मोनल वैल्यू ले लो, तो दैट इज जस्ट एवरेज. इट इज नॉट आइडियल कि अगर 120 के ऊपर गया तो आपका नॉर्मल नहीं, ऐसा नहीं. So it is just an average and it can vary from person to person. That's why they have given a range. It is expressed in the range. So that is not a actual value, that is a average value. So that's why these kind of drugs are used to decrease the blood pressure. So majorly कौन से ड्रग यूज होते हैं? सबसे पहले होता है आपका अल्फा 1 ब्लॉकर. We have seen in the pharmacology. So alpha 1 blockers are used in the hypertension. Then alpha 2 agonist, central alpha 2 agonist, that is a clonidine, methyl dopa, and that. Okay, those drugs are also used as antihypertensive. Then your beta blockers, they are also used as antihypertensive. So these sympatholytics, sympathomimetics, sympatholytics, they are used in the hypertension. They are used in the asthma. Asthma में कौन से होते हैं? Selective beta 2 agonist, because beta 2 receptor is present in the bronchi, and that will stimulation of beta 2 receptor will dilate the bronchi. That's why beta 2 agonists, they are used as a bronchodilator. And various allergic conditions, आप बोलेंगे सर एलर्जिक कंडीशन में क्या यूज है उसका और कैसे करेंगे उसको यूज, क्यों करते हैं, सबसे मेन चीज, ठीक है. सो दीज आर द सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स. दे कॉज पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन. आपको मालूम है पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं वो, और म्यूकोजोनल जो वेसल्स होते हैं उसको भी कंस्ट्रिक्ट करते हैं. So because of their property to constrict the smaller blood vessel, that is a capillaries and your peripheral blood vessels. Okay, so allergy में क्या होता है? Allergy में होता है आपका vasodilation because of some antigen antibody reaction. So there is one hypersensitivity occurs and your blood vessels get dilated and their permeability is increased. So अंदर जो भी blood vessel की कंटेंट है उसमें का लीक हो जाएगा बाहर, परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से. तो वहां पे क्या होगा? इडिमा होगा, वहां पे इडिमा हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी. सो इन दैट केस आल्सो sympathomimetic drugs are used. They are also used in the allergic conditions, right? Then most of these drug has intact or partially. Now that is the most important structural feature. So most of these sympathomimetic drugs will have intact or partially substituted amino group and hence they are called as a sympathomimetic amines. So ये जो sympathetic drugs होते हैं, जो sympathomimetic drugs होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें एक टर्शियरी अमाइन या फिर क्वाटरनरी अमाइन या फिर डाई सब्सट्रेट अमाइन, ऐसा एक ग्रुप होगा उसमें. So sometimes उसको क्या बोलते हैं? Sympathomimetic amines. Okay, so these drugs are majorly classified into two types. We have seen the classification in the pharmacology also. So these drugs are classified into two types. First one is a catecholamine, two groups, two class. Okay, so catecholamines and non-catecholamines. So what do you mean by catecholamines? So catecholamines means these drugs or those drugs which are having catechol nucleus. Okay, so which are having catechol nucleus. So what is catechol nucleus? Catechol nucleus is nothing but a benzene ring with 2 hydroxyl group. Okay, that is nothing but the 3,4 dihydroxy phenyl nucleus, 3,4 dihydroxy phenyl nucleus, or that nucleus is called as a catechol nucleus. Okay, so those are known as a catecholamines. Those are derivative of catechol nucleus. Those are known as a catecholamines. Okay, so those sympathomimetic drugs which are having catechol in their structure, they are known as a catecholamines. So what are these? What are the example? Adrenaline, epinephrine, adrenaline or epinephrine, or because adrenaline is also known as epinephrine. They are the same term. Adrenaline, epinephrine, noradrenaline, norepinephrine. Then dopamine. Okay, so these three, adrenaline, noradrenaline and dopamine, these are the endogenous. They are the endogenous catecholamines. Means आपके बॉडी में ही सिंथेसिस होते हैं, वो बॉडी में ही डिस्ट्रक्ट होते हैं. So that's why they are endogenous. Okay, they are natural. Okay, they are naturally occurring catecholamines. Now isoprotanol or isoprotanol.
So that is a synthetic one. That is a synthetic one catecholamine. Okay, ये lab में synthesis किया है उसका. That's why it is synthetic. Okay, then non-catecholamines. So non-catecholamines means those drugs which are sympathomimetic, but they will not have a catechol nucleus in their structure. Okay, for example, amphetamine, ephedrine. Okay, so let's have a quick look about the structures. ये होता है आपका कैटेकॉल न्यूक्लियस. ओके, दिस इज योर कैटेकॉल न्यूक्लियस, बेंजीन प्लस 3,4 डाइहाइड्रोक्सी. ओके, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजील और फिनाइल, that is a catechol nucleus. Now let's come to the structure of dopamine. So dopamine will have a structure like this. So catechol nucleus plus ethylamine, catechol nucleus plus ethylamine. So you can 1 2, इसको एक 1 नंबर देंगे, दूसरे को 2 देंगे, ठीक है, या फिर इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 4, या 2 3 4. सो 4 into 2 अमाइनो इथाइल कैटेकॉल, ऐसा लिख सकते हो उसका अल्फेक नेम आप, ठीक है. उसके बाद ये डोपामाइन होने के बाद डोपामाइन से आपका बनता है आपका नॉर एड्रेनलिन. सो नॉर एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर ये है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑन दिस कार्बन आइटम. सो हियर you have one hydroxy group. So one hydroxy, just add one hydroxy in the dopamine, you will get a structure of noradrenaline. Okay, so that is a noradrenaline. Now let's come to the structure of adrenaline. So what is the difference again this in these two? So you just have to add methyl here over. So amino methyl. Okay, so here is amino methyl. So agar aap, if you want to write the name of this structure, then how could you write? So it is nothing but the 2 methyl amino 1 hydroxy कैटेकोलामाइन, 2 मिथाइल अमाइनो. यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन एटम 1 है, ये कार्बन एटम 2 है, तो 2 मिथाइल अमाइनो. ओके, 1 हाइड्रोक्सी, ऐसा लिख सकते हो. या फिर आप कैटेकॉल की बजाय आप क्या लिख सकते हो, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, ऐसा भी लिख सकते हो. ये कैटेकॉल शॉर्ट फॉर्म है उसका. या फिर 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, ऐसा भी लिख सकते हो. मतलब आपको एक डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि 2 मिथाइल अमाइनो 1 हाइड्रोक्सी 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, ऐसा लिख सकते हो. या फिर कैसा लिख सकते हो, 2 मिथाइल अमाइनो 1 हाइड्रोक्सी कैटेकोलामाइन. सो दैट इज adrenaline. So is that clear structural difference? Now isoproterenol and isoprenaline is the same thing. Isoprenaline. So what is the structure difference between these two? Just addition of dimethyl over here. So ये जो नाइट्रोजन है वहाँ पे डाइमिथाइल ऐड किया है, that is a isoprenaline. So but this is also catecholamine. You can see the catechol in the nucleus. So catecholamine, but it is not a natural. So it is not a endogenous. It is a synthetic. So it is again a synthetic catecholamine. It was a first class. Now second class. So catecholamine, now how they are synthesized in the neuronal endings. Actually we have completed this portion. We have seen this portion, but still I will revise. Catecholamines are synthesized from L-phenylalanine. Remember, N-phenylalanine is the aromatic amino acid. Okay, and all the catecholamines are synthesized from that amino acid. Okay, so N-phenylalanine will be converted into tyrosine, then tyrosine will be converted into dopa, then dopa will be converted into noradrenaline, and then later adrenaline. Okay, so this is the sequence. Okay, so the phenylalanine is the precursor for various catecholamines. Okay, so they are synthesized from N-phenylalanine amino acid. Various enzymes participating in the biosynthesis of catecholamines are. Now what are the enzymes? Those are participating in the synthesis. So first the phenylalanine hydroxylase, then tyrosine hydroxylase, then dopa decarboxylase, dopamine beta oxidase, then phenylethylamine, N-methyl transferase. I will demonstrate, you don't worry about this. Now conversion of tyrosine to dopamine. Conversion of tyrosine to dopamine is a rate limiting step in the synthesis of catecholamine. Okay, remember, rate limiting step in the catecholamine. So what do you mean by rate limiting step? So if in any sequence of reaction or in any pathway, कौन सा भी एक pathway, for example glycolysis है, या फिर आपका uric acid cycle है, या फिर urea cycle है, तो उसमें का एक reaction ऐसा होता है कि वो that is a very slow reaction. So slowest reaction in a cycle, that is known as a rate limiting step. So conversion of tyrosine into dopamine, that is a rate limiting step in the synthesis of these catecholamines. Okay, and after the synthesis it will be released from
storage house. So after synthesis, they are stored in the synaptic vesicles. Okay, they are stored in the synaptic vesicles and they are released आफ्टर द इम्पल्स कि वहाँ अगर न्यूरॉन में इम्पल्स आएगा तो वहाँ पे जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो उसमें कैल्शियम का एंट्री होगा, वेसिकल्स में कैल्शियम का एंट्री होगा और कैल्शियम का एंट्री होने के बाद दैट स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर विल बी released, that catecholamines will be released by exocytosis process that we have seen in the pharmacology. Okay, after that, after the release, some part will be reuptaken into vesicle, some part will be metabolized inside the neuronal membrane, some part will be metabolized inside the synapse, and remaining part will interact with the receptors. Okay, so that is how their synthesis and release. These catecholamines are metabolized by two enzymes. I have already told you. So MAO enzyme, that is present in the neuronal membrane. It is present in the neuron MAO. Okay, and COMT, that is catechol orthomethyl transferase. Catechol orthomethyl transferase. So catechol orthomethyl transferase is present in the synaptic cleft. Okay, and after metabolism, their metabolites will be eliminated through urine. Okay, so what is the main metabolite? 3-methoxy-4-hydroxy mandelic acid or vanil mandelic acid. Synthesis, storage and release of catecholamines. So ये हो गया आपका phenylalanine. So you have phenylalanine, that is a aromatic amino acid. Okay, that will be converted into tyrosine by phenylalanine hydroxylase enzyme. Okay, once you got tyrosine will be converted into 3,4-dihydroxyphenylalanine, that is the DOPA, dihydroxyphenylalanine, DOPA. Okay, by the enzyme aromatic amino decarboxylase, by the enzyme tyrosine hydroxylase. So there is a, once you got tyrosine, so there will be again hydroxylation. Okay, अब देखो यहाँ फिनाइललानिन जो है उसके यहाँ पे जो रिंग है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं. So first of all, phenylalanine hydroxylase means that will introduce hydroxyl group over here. Okay, then this is structure of tyrosine. So tyrosine hydroxylase again means again there will be introduction of hydroxyl group over here. So there is a dihydroxy phenylalanine, short form में DOPA. Once a DOPA is there, so dihydroxyphenylalanine is there, so it is converted into dopamine. Okay, so what is the structural difference? Only this carboxyl. So this carboxylic group will be removed. That is nothing but the aromatic amino acid decarboxylase. Decarboxylase means वो remove करेगा carboxyl group को. तो अगर dihydroxyphenylalanine से carboxylic group निकल जाएगा तो आपको मिलेगा dopamine. Okay, now this dopamine itself, it is a neurotransmitter, itself it is a catecholamine. Okay, it has a different role, it will act on its different receptor D1, D2, D3, D4 and D5. Now dopamine is converted into noradrenaline by the enzyme dopa beta hydroxylase. Dopa beta hydroxylase means again there will be introduction of hydroxyl group, but where this is known as a alpha carbonatum. Okay, and this is known as a beta carbonatum. ये जो दिख रहे हैं आपके ये अमाइनो के नजदीक जो है अल्फा, दूसरा जो है बीटा. सो बीटा हाइड्रोक्सिलेज मींस यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा. So dopamine beta hydroxylase will convert dopamine to noradrenaline, and noradrenaline will be converted into later adrenaline. Okay, now adrenaline और noradrenaline में क्या फर्क है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप का. So here is only methyl group. So N-methyl transferase that will come in picture. So phenylethylamine N-methyl transferase will convert noradrenaline to adrenaline. So this is how they are biosynthesized, and then they are stored in the synaptic vesicles. Okay, and after that after the impulse they will be released by exocytosis. The process of exocytosis याद रखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, वहां पे ऑप्शन थे एक्सोसाइटोसिस, पैसिव डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव सिक्रेशन. तो आप कंफ्यूज हो जाते हो उस टाइम पे. सो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज सिक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस. नाउ फ्यू एक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस. कितना एक्शंस है कैटेकोलामाइंस का कि आपको मालूम है, वी हैव सीन इन द फार्माकोलॉजी. सो दे विल हैव एक्साइटेटरी एक्शन ऑन स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे. ग्लैंड्स का जो स्पेसिफिक ग्लैंड है पर्टिकुलरली पिलोमोटर मसल, उसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे. उसके बाद they have inhibitory action on smooth muscle of GIT, bronchial tract and skeletal muscle blood vessel. मतलब क्या कि GIT का जो पेरिस्टाल्सिस है वो कम हो जाएगा आपका
ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ जाएगा, सॉरी ब्रोंकियल सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे, एंड स्केलेटल प्लस मसल जो है, स्केलेटल ब्लड वेसल वो डायलेट हो जाएंगे. ओके, सो अगेन नेक्स्ट वन इज वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड पे क्या होगा कि सिक्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्लैंड. Positive inotropic and positive chronotropic effect on heart. So your heart rate will be increased, force of contraction, then blood pressure will be increased. Okay, then respiratory stimulation will be there. Appetite decrease in the appetite. आप जब भाग रहे हो तो भूखने लगी. Then increase in the glycogenolysis. Means glycogenolysis means breakdown of glycogen. Okay, so glycogenolysis. Why there is increase in glycogenolysis? कि आपको भागना है तो एनर्जी लगेगा. एनर्जी मतलब क्या है? ग्लूकोज लग जाए. तो ग्लूकोज अवेलेबल कहाँ से होगा? तो ग्लूकोज अवेलेबल होने के लिए उसका जो स्टोरेज हाउस होता है लीवर. ओके, सो लीवर में ग्लाइकोजन होता है स्टोर. ओके, so that glycogen will be broken down and from that glycogen you will get a glucose. So there is increase in glucose level in the liver, in the blood. Okay, then skeletal muscle वहाँ पे यूटिलाइजेशन कम होगा. देन रिडक्शन ऑफ फैटी एसिड मीन्स फैटी एसिड कम कैसे होगा यहाँ से? क्योंकि फैटी एसिड का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो दैट विल बी द एक्शंस. देन डिक्रीज इन द इंट्राओकुलर टेंशन. जो आईज में आपका जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है एक्वियस ह्यूमर, उसको डिक्रीज कर दे. देन इपिनेफ्रिन मीन्स इपिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनालिन. देन इपिनेफ्रिल बोरेट, दैट इज अ बोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स विद द इपिनेफ्रिन. देन Diplavaprine means it is a pivalic acid derivative. Pivalic acid ester of epinephrine with the pivalic acid. Ester of epinephrine with the pivalic acid. That's a diplavaprine. Now we'll see the structures. See, you can see actually this is amphetamine. Amphetamine is a non-catecholamine sympathomimetics. Amphetamine. So it is just a simple amine. Okay. So आप देखो यहाँ पे this carbon atom 1, then this carbon atom, this carbon atom 1, then 2, and then 3. So 2 amino, 1 phenyl propane. That is a alphabet name of your amphetamine. Okay, then ephedrine. Similar, it's just similar, just difference of hydroxyl group. यहाँ पे hydroxyl group ज़्यादा है, बाकी तो same structure है. Ephedrine. So amphetamine, it is a indirect acting sympathomimetics. Ephedrine is also indirect, means they are also non-catecholamine sympathomimetic drug. Okay, so ephedrine is mostly used in the it is used in the cough and allergic. It is used to reduce the cough and allergic condition, some allergic condition. These drugs are not used for the treatment of anti-hypertension, but they have their own specific use. Like ephedrine is a bronchodilator. Okay, so it is a bronchodilator. So it's a isomer known as a pseudoephedrine. That is now used more useful in nowadays. That is mostly used in nowadays. So इसका जो pseudoephedrine नाम का एक isomer है, उसका यूज करते हैं आजकल. So amphetamine का actually this amphetamine does not have much therapeutic application because this is a drug of abuse. अगर इसको यूज करेंगे तो आपको लत लग जाएंगी. ठीक है, तो इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं आजकल एम्फेटामाइन को. But still it is used as a CNS stimulant. Okay, it is used as a CNS stimulant. It is used in treatment of narcolepsy, attention deficit hyperactivity syndrome. It is just a ester of noradrenaline or epinephrine with the pivalic acid. It is a pivalic acid. Okay? Then ephedryl borate. Ephedryl borate means ये ephedrine plus boric acid का complex है, ephedrine borate. So these are the structures. Now let's move to the next point. You just focus on this structure. This is a basic skeleton. This is a basic skeleton required for a drug to be sympathomimetic. कि कोई भी ड्रग आके sympathomimetic एक्शन नहीं दिखाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है. ठीक है, क्या क्राइटेरिया है उसका? कि वो स्ट्रक्चर में आपको एक बेंजीन रिंग चाहिए, उसके बाद में आपको एक इथिलीन ब्रिज चाहिए. ठीक है, उसके बाद में आपको अमाइनो चाहिए. ठीक है, so essential skeleton for the sympathomimetic activity. So this is the basic skeleton required for sympathomimetic activity. So we'll see the features one by one. Okay, so this is the aromatic portion. Okay, ये जो है benzene ring plus R3 R4, that is aromatic portion, and this R2 and this A and B
मीन्स ए मीन्स अल्फा, बी मीन्स बीटा, ठीक है। सो ये जो है दैट इज इथिलीन ब्रिज एंड दिस इज अ टर्मिनल अमीनो ग्रुप. नाउ डायरेक्ट एक्टिंग sympathomimetic drugs will have R3 R4 hydroxyl group over there. Okay, means they are catecholamines. ओके, डायरेक्ट एक्टिंग मींस कैटेकोलामाइंस. यहाँ पे R3 R4 हाइड्रोक्सिल होगा या फिर मिथॉक्सी होगा या फिर हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी होगा यहाँ पे, तो वो होंगी कैटेकोलामाइंस. एंड R2 भी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल होगा. सो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. सो फॉर एग्जांपल नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड टेजोलॉल. वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज थ्री. ओके, सो टेजोलॉल का नहीं देखा है, वो बाद में अपने आपको बुक में देखना है. Indirect acting drugs, so they will not have substitution at R3 R2 R4. okay, ये जो तीन है, ये R2 R3 जो है, इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में, बिकॉज दे आर नॉन कैटेकोलामाइन डेरिवेटिव. सो डायरेक्ट एक्टिंग कैटेकोलामाइन डेरिवेटिव, नॉन इनडायरेक्ट एक्टिंग नॉन कैटेकोलामाइन डेरिवेटिव. सो यहाँ पे जो R, ठीक, बट OH ग्रुप एट बीटा, तो यहाँ पे तो OH ग्रुप रहेगा लेकिन इधर कोई OH ग्रुप नहीं रहेगा. जैसे आपने देखा था एम्फेटामाइन में, यहाँ पे कोई OH ग्रुप नहीं था. ये देखो यहाँ पे है कि कोई OH ग्रुप, इस पे नहीं. इपेटिन पे है क्या? नहीं. सो दीज आर द इनडायरेक्ट एक्टिंग. ओके, दीज आर द नॉन कैटेकोलामाइंस. राइट, राइट. देन मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग. सो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग, दोज ड्रग्स विच आर हैविंग बोथ द फीचर ऑफ अबाउट टू. ये भी होगा उसमें, ये भी होगा. दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड एक्टिंग which will have both the structural feature of above. Right? So this is a primary requirement for a drug to be a sympathomimetic. Now, what are the targets for new drug development for sympathomimetic drugs? Okay, so targets for development for altering the altering the sympathomimetic nervous system, sympathetic nervous system. There is the okay. So now targets. What are the different targets for drug? A drug can alter the biosynthesis and storage of catecholamines or noradrenaline. देखा था हमने वेसिमिकॉल एंड ऑल दैट. ओके, अल्फा मिथाइल डोपा एंड ऑल दैट. ये फार्माकोलॉजी में हो चुका है आपका, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं. ओके, ड्रग्स दैट कैन अल्टर द मेटाबॉलिज्म एंड रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन. मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करने वाले ड्रग जो है वो बढ़ाएंगे, जैसे आपका कॉम्ट इनहिबिटर्स हो गया या फिर माओ इनहिबिटर्स हो गया. ठीक है, रीअपटेक इनहिबिटर्स हो गया. So those drugs. Then drugs that can increase the function of noradrenaline by acting as a agonist or decrease the function of noradrenaline acting as an antagonist. Okay, so those kind of drug will be there in the this sympathomimetic chapter. Now, drug that can alter the post-synaptic regulation of the hormonal action by hormonal action. Drug affecting the biosynthesis. So you have already seen this alpha methyl dopa, alpha methyl tyrosine and alpha methyl dopa that will inhibit the action of tyrosine hydroxylase, which is the first step in the biosynthesis of noradrenaline. So alpha methyl dopa inhibits the dopa. Okay, alpha methyl dopa inhibits the dopa dihydroxyphenylalanine decarboxylase. Okay, so alpha methyl dopa जो है वो क्या करेगा, डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा. So there will be no synthesis of noradrenaline. Okay, now there is another drug known as sulfiram, not disulfiram. Disulfiram is another. Disulfiram is a drug of choice in the alcohol intoxication. That is another thing. ये sulfiram एक drug है that will inhibit the dopamine decarboxylase. So it is also a drug acting in the sympathetic nervous system. So it will alter the responses. Indirect acting drug agonist like tyramine. Okay, so sulfiram inhibits the dopamine decarboxylase and that's why it is a indirect acting drug again. Then tyramine, it is also monoamine and it is known as a false neurotransmitter. एक बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, which one of the following is a false neurotransmitter, and there was one option tyramine. Tyramine is a false neurotransmitter because it is not a true neurotransmitter. ऐसा कोई neurotransmitter है ही नहीं. लेकिन false neurotransmitter क्यों बोलते हैं इसको? Because this tyramine is a monoamine and that is a precursor for your monoamine, means that is a precursor for noradrenaline. Okay, and that's why this tyramine is known as a false neurotransmitter. Now cocaine also interfere with the noradrenaline by its reuptake. So no, cocaine जो है, cocaine addict, उनमें देखो उनका मूड स्विंग बताए, कभी कभी इतना खुश हो जाते हैं या फिर कितना डिप्रेस हो जाते हैं. आपने कबीर सिंह देखा होगा, कबीर सिंह कैसा ही करता है, अचानक ही उसको कुछ हो जाता है. उसका जो नॉरएड्रेनालिन लेवल है उसका क्या होता है,
रीअपटेक में इंटरफेयर करता है. दैट्स व्हाई अचानक एक्साइटेशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज द ब्रेटिलियम. So bretylium is a true reuptake inhibitor of noradrenaline. Remember, bretylium tosylate. Okay, ये tosylates उसका salt होता है. So bretylium tosylate is a true reuptake inhibitor of noradrenaline. Okay, so it will increase the level of noradrenaline at the synapse. Okay, so bretylium tosylate. So it is used as a bretylium tosylate. It is used in the hypotensive crisis. किसी का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है उस टाइम पे वो ब्रेटिलियम टोसाइलेट यूज करते हैं. अब बोलेंगे ब्रेटिलियम टोसाइलेट और हाइपोटेंशन का क्या संबंध. अभी देखो ब्रेटिलियम क्या है. इट इज अ रीअपटेक इनहिबिटर. मतलब आपका क्या होगा कि नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो गया. रिलीज होने के बाद उसमें क्या होता है कि रिलीज होने के बाद इमीडिएटली उसका कुछ रीअपटेक होता है. मतलब मान लीजिए कि 4 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए साइनेप्स में. ठीक है, उसमें का एक मॉलिक्यूल वापस गया रीअपटेक से. एक मॉलिक्यूल का रीएप्ट 4 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए मान लीजिए. एक मॉलिक्यूल रीअपटेक हो गया वापस न्यूरॉन में और बचे 3. अभी 3 में से एक मॉलिक्यूल का कॉम्प्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है. बाकी जो जो 2 बचते तो वो क्या करेंगे, वो रिसेप्टर पे एक और एक्ट होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर. अभी मान लीजिए कि एक आधा ड्रग है जो रीअपटेक इनहिबिट करता है तो वापस जो नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक हो रहा है वो नहीं होने दे रहा है. मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्स में उसका लेवल बढ़ जाएगा. अगर नॉरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा मतलब नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, उसका काम करेगा. उसका काम क्या है, जाके रिसेप्टर पे एक्ट होना. कौन से रिसेप्टर, अल्फा बीटा रिसेप्टर. तो अल्फा 1 की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और बीटा 1 की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा. सो टोटल ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज. दैट्स व्हाई ब्रेटिलियम यूज्ड इन द हाइपोटेंसिव क्राइसिस. Indirect acting agonist like amphetamine, pentyramine and its congener. So we have already seen the structure of amphetamine. Okay. Then again, this clonidine. Clonidine is known as a central alpha 2 agonist. Okay. Clonidine is a central alpha 2 agonist. कि जो सेंट्रल जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो जो न्यूरॉन्स में जो होता है अल्फा 2 रिसेप्टर, जो प्री साइनेप्टिक जिसको बोलते हैं अपन, तो उसका रोल क्या है, दैट इज इनहिबिट इन नेचर. दैट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ योर नॉरएड्रेनालिन. ओके, तो रिलीज नहीं होने देगा. तो दिस क्लोनिडीन इज यूजफुल इन द हाइपरटेंशन. ओके, सो इट इज अ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग. रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आर नॉट सेंट्रली एक्टिंग. ओके, सो क्लोनिडीन इज अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव अल्फा 2 agonist. ओके, सो इट्स क्लोनिडीन. आईपैक नेम क्या है उसका, आईपैक नेम 2,6-डाइक्लोरोफिनाइल. ओके, 2,6-डाइक्लोरोफिनाइल 4,5-डाइहाइड्रो इमिडाजोल 2 अमाइन. यहाँ पे भी एक यहाँ पे एक क्लोरीन रह गया. सो 2,6-डाइक्लोरोफिनाइल देन या 5,4-डाइहाइड्रो मीन्स 5 और 4 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं तो डाइहाइड्रो. ठीक है, 5,4-डाइहाइड्रो imidazole 2 amine, that is a clonidine. Then dopamine is also a agonist. Now drug affecting the metabolism of noradrenaline, that is a MAO inhibitors. अब देखो न्यूरॉन्स में अगर माओ को इनहिबिट कर देंगे तो माओ विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन्स. सो द अल्टीमेटली कैटेकोलामाइन लेवल्स विल बी इंक्रीज्ड. Okay, so MAO inhibitors like iproniazide and pergylene. Actually, these MAO inhibitors we are going to discuss it in the details in the because there is one chapter remaining that is known as anti-Parkinson drugs. कि anti-Parkinson drugs जो फार्माकोलॉजी तो हो गया उसका, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाकी है. तो उस टाइम पे अपन माओ इनहिबिटर्स, कॉम्प्ट इनहिबिटर्स ये सब देखने वाले हैं. तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा आपको माओ इनहिबिटर्स के बारे में सब. इप्रोनियाजाइड, परगाइलिन, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, इप्रोनियाजाइड एंड परगाइलिन, these are the MAO inhibitors. Means they will inhibit the monoamino oxidase enzyme and they will increase the level of noradrenaline, dopamine and all that. ठीक है, so that's why MAO inhibitor are used in the anti-Parkinson. क्यों कि माओ को इनहिबिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, माओ इनहिबिट हो गया तो that MAO will not be available for the metabolism of noradrenaline, dopamine. So ultimately what is important in the Parkinson, to increase the dopamine level, and that's why MAO inhibitors are used in the dopamine. But still there are two kind of MAO, MAO A, MAO B. We have discussed in the pharmacology, but still MAO A is responsible for the metabolism of dopamine and MAO B is responsible for the metabolism of your
noradrenaline, and adrenaline. Okay, so MAO-B inhibitors are not much useful in the Parkinson disease. Now, direct acting agonist, structural activity relationship. So, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसका जो स्ट्रक्चर बोला था मैंने, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए कि आप एक फिनाइल देंगे, बीच में 2 कार्बन एटम है और राइट साइड में क्या है आपका अमाइनो ग्रुप है. सो द अमाइनो ग्रुप एंड एरोमेटिक रिंग शुड बी सेपरेटेड बाय 2 कार्बन एटम which is essential for activity to be any drug which is agonist to a adrenal receptor. So it should have same structure. So amino group and aromatic ring should be separated by 2 carbon atom. This was question in GPAT. GPAT में भी क्वेश्चन था, नाइपर में भी क्वेश्चन था. ठीक है. Now presence of hydrogen hydroxyl group. Okay. So presence of hydrogen should have a correct configuration. Okay. So lever rotary on the beta carbon atom. So beta carbon atom पे जो हाइड्रोजन है, मतलब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन, तो जो बीटा कार्बन एटम है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है that should have a LEO configuration that will increase the agonistic activity. अगर LEO configuration है उसका तो agonistic activity बढ़ जाएगा, but antagonistic activity is the reduced by methyl group on alpha carbon atom. अगर alpha carbon atom पे methyl group डालेंगे आप तो agonistic activity डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज वाई अल्फा मिथाइल डोपा है ना, जैसा अल्फा मिथाइल मतलब कि अल्फा मिथाइल पे अल्फा कार्बन पे मिथाइल है उसका और डोपामाइन का स्ट्रक्चर में. सो इट इज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर. प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू माओ. देन स्मॉल सब्स्टिट्यूशन लाइक हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूशन कैन बी प्लेस्ड ऑन द कार्बन विदाउट अफेक्टिंग द एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. मतलब जो अल्फा बीटा कार्बन है उसके ऊपर आप ये छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. हाइड्रोजन एंड मिथाइल कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑन द नाइट्रोजन विदाउट अफेक्टिंग द एगोनिस्टिक एक्टिविटी. जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उसके ऊपर आप मिथाइल लगा सकते हो, डाइमिथाइल लगा सकते हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन लगा सकते हो, तो एक्टिविटी खराब नहीं होगा. दैट इज अ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी. नाउ नाइट्रोजन एटम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन ऑन इट. एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए उसमें, तभी एक्टिविटी दिखाएगा. नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम agonist. So phenylephrine. So this phenylephrine is mostly used as a anti-allergic drug, or it is used in the treatment of your colds. That is a phenylephrine. So it will constrict the blood vessel present in the nose. अगर आपको rhinitis हो गया या फिर rhinorrhea हो गया, मतलब आपका नाक बह रहा है, तो उसमें ये फिनेलेफ्रिन यूज करते हैं. आपने अगर सर्दी का कोई टैबलेट देखा होगा उसमें फिनेलेफ्रिन होगा. देन फिनाइल प्रोपेलामाइन, सेम, उसका भी यूज सेम है, फिनाइल प्रोपेलामाइन. इसका मैलिएट सॉल्ट यूज होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? देयर इज ओनली वन डिफरेंस. ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है फिनाइल प्रोपेलामाइन. ओके. सो फिनाइल प्रोपेलामाइन मींस देखो फिनाइल, ये प्रोपेलामाइन 1 2 3 प्रोपेन एंड अमाइन, फिनाइल प्रोपेलामाइन. फिनेलेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेलामाइन. देन मिथोक्सामाइन इज देयर. मिथोक्सामाइन मींस डाइमिथोक्सी ग्रुप. कहाँ पे डाइमिथोक्सी है? ये बेंजीन रिंग के ऊपर पहला पोजीशन पे डाइमिथोक्सी ग्रुप, दैट इज नोन एज मिथोक्सामाइन. नाउ नेप्थाजोलिन. Naphtazolin is a selective alpha agonist. Okay, they are the alpha agonists. Naphtazolin, xylomethazolin. Now these drugs are used as a nasal decongestant. Okay, so आपके नोज भर रहा है, नोज में अगर सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए यूज करते हैं. Now naphtazolin, you can easily identify the structure of naphtazolin by just focusing on this basic heterocyclic ring. So there is a naphthalene ring over here. Naphtha, zolin, azo means zolin. Naphtazolin means here imidazolin is the ring, heterocyclic ring. Imidazolin plus naphthalene. Naphtazolin connected by methyl bridge. Okay. So what is the IPAC name? 2 into naphthalene, 1 methyl, 4 5 dihydroimidazole. That is the IPAC name. Then xylomethazolin. Xylomethazolin means it is a derivative of, as the name indicate, नाम में ही रखा है सब कुछ. Xylo means xylene ring. Xylo means xylene ring. What is xylene ring? ये देखो, ये हुआ है आपका xylene ring. Benzene ring with methyl group. That is a xylene ring. So xylomethazolin. So it is a tertiary butyl 3 into
अब देखो मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ नॉमेनक्लेचर आपको. सो 6. ओके, तो ये हुआ है आपका, ये हो गया आपका 1 पोजीशन, ये हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, ये बेंजीन का. सो 6 टर्शरी ब्यूटाइल 3, ये 3 है. ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल 3. 2 into 4 5 डायड्रो. अभी ये 1 है, ये 2 है, ये कार्बन एटम 1 है, ये कार्बन एटम 2 है. 2 into 4 5 डायड्रो. अभी देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो इसलिए 4 5 डायड्रो. ओके, सो 2 into 4 5 डायड्रो इमिडाजोल 2 इल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 मिथाइल 2 मिथाइल फिनाइल 2 मिथाइल फिनॉल, ऐसा 2 मिथाइल फिनॉल. ये हो गया xylomethazolin. So these naphtazolin, xylomethazolin. Okay, so these drugs along with phenylephrine, phenylpropylamine malate, these are used as a nasal decongestant. Remember, they are not a pressure agent. They are not used to increase the blood pressure, but they are used as a nasal decongestant. Now next is a selective beta agonist. Okay, now you have seen the selective beta agonist. They are useful in the asthma because they will dilate the bronchi. Okay, now structural activity of them in very short. So hydroxyl group at para position or meta position is necessary for activity. For example, you can see it is a structure of tolbutyline and this structure of salbutamol. कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इम्पोर्टेंट है पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन पे. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी. Methyl on alpha carbon atom increases the selectivity for the bronchial beta 2 receptors. Okay. Methyl group on alpha carbon atom. Methyl group on alpha carbon atom. That will increase the selectivity for beta 2 receptor. ये यहाँ पे इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे देखो, that will increase the selectivity for bronchial beta 2 receptor. Now substitution with one hydroxyl group on the phenyl ring will create hindrance for metabolism of COMT. Substitution of one of the hydroxyl group on the phenyl ring will create hindrance for metabolism of COMT. Now these being a catecholamines, these are metabolized by COMT. कैटेकोल न्यूक्लियस दिख रहा है ना आपको, तो उसके वजह से मेटाबॉलिज्म होगा, कॉम्ट करेगा कैटेकोलामाइन और ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज. तो अगर इनमें का कोई भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, that will produce a hindrance that will oppose the metabolism. For example, salbutamol. ये देखो methyl hydroxyl group डाला है, so it will prevent the metabolism. And yohimbine, nafazolin, piperacin, these are the example of selective alpha 2 receptor agonists also. Again, now alpha blockers. What is important in this chapter? Alpha blockers and beta blockers. Those 2 points are very important.